Okay, so in today's class, we'll learn about the linked list. But before we go into the concepts of linked list, first we need to discuss कि why do we even study about the things. Right? So last class में हमने arrays के बारे में पढ़ा था. So we discussed how arrays are declared and how these are stored in the memory. तो arrays declare कैसे करते हैं? For example, integer array. Okay. So what this line will do is will create an array of which can store the 5 integers in the memory, and you can fill some values like 3, 4, 1, 4, 5, and we got to know that कि हर सर वो लास्ट का जो 2 क्वेश्चन था ना वो ट्राई करके अगला दिन पूछ लेंगे। हाँ ठीक है कोई नहीं. Yes. तो we discuss that कि हर एक के इंडेक्स ना, बट अरे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वी नीड टू डिसाइड द साइज ऑफ द अरे at the beginning of the program or when you want to like declare the array. So size of array is fixed. Right. So अगर मान लो you are maintaining some kind of data like कि आप कोई event organize कर रहे हो and you want to store the list of participants कि कितने लोग participate कर रहे हैं, तो you create a array like for example string or something like this, string participants to store the information about the कितने participants आए हैं आपके प्रोग्राम में. तो बट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम यू डोंट नो कि कितने participants आने वाले हैं, तो हाउ विल यू फिल दिस साइज इंफॉर्मेशन है. राइट, यू अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने participants प्रोग्राम में आने वाले हैं, देन यू बिफोर एंड यू डोंट नो कि दिस साइज ऑफ द अरे कितने साइज का अरे आपको क्रिएट करना है. So that's the issue with the array, right? कि अगर we don't know about the size, then either what can we do? Either we can create this size too large. अगर मैंने ऐसा किया, for example, I created the array of size 1000. I'm expecting 1000 participants, and at the end of the program, only 100 participants ही आए. तो अगर 100 participants आए तो जो 900 स्पेस था वो वेस्ट हो गया. Right, itna memory space waste because now your program will, whenever you initialize the array, it will reserve the that space in the memory, and other things can't be stored at that reserved space while your program is running. So agar you initialize the array for like 1000 participants and at the end only 100 participants showed up, then you are kind of like wasting the memory space, which is quite a lot, like 900 participants के लिए. तो अगर 100 भी कुछ bytes of memory ले रहा होगा तो you'll waste it quite a lot. Or you do opposite of that. Suppose you too small, you like create an array which is quite small. Like for example, you create an array of 100 participants, and at the end number of participants which showed up is 200. Then since initially your array is of the 100 size, but now you need to store the data of the 200 participants, so there is no enough space in the space in your array. So in both cases, for the in case of arrays, we kind of need the size of the array which is
कितनी कितनी साइज का आपको अरे क्रिएट करना है, कितना आपको रिजर्व स्पेस रिजर्व करना है। सो दैट इज ऑलवेज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अरे कि अगर आपको पहले से साइज का नहीं पता या ड्यू टू सम रीजंस आपको साइज चेंज करनी पड़ रही है, तो देन यू नीड टू डू समथिंग एल्स, राइट। बिकॉज अगर मान लो यहाँ पे जैसे 200 पार्टिसिपेंट्स आ गए एंड आपने अरे बनाया वो 100 पार्टिसिपेंट्स का है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट a न्यू अरे of 200 size and then copy all the previous data. So this will like you are spending extra time for this, like copying, creating another array, and then copying all the data from the older array. So for arrays, this is one of the problem that we face कि आपको अगर initially size का नहीं पता है कि कितनी size you require, then there might be issues. You might create an array with too large size. In that case, you will end up like wasting the space, and you might create an array with a size which is too small, and you might need more space in the later part of the program. And in that case, you need to create new array then and waste all this space and computational resources. Okay. So that is the one problem for the array कि array size is fixed and we don't know कि if we require the like modifications in the array, then it will take. And another problem in the array that we might face कि usually array में जो है कि suppose now, right, suppose like you already have the 5 elements in the array, or for example let me create another array. Right, so I have this array of which has the 6 size indexing from 0 to 5, and 5 elements are already present in the array, but the sixth element is empty now. But so there is one empty space for one more element. So suppose I want to insert another element called 6 in this. So if I want to like insert at the end, then अगर मुझे सिर्फ 5th इंडेक्स पे करना था, तो what you can do and your work is done. But what if you want to store this at a separate location, like कि आपको instead of storing at the last or at the last of the array, you want to store it somewhere in between, like कि third position पे आपको store करना है. तो उस केस में क्या होगा? You need to like, because there is already some value present here, so if you simply do this, so what it will do, it will replace the older value. Replace the older value at index 6, and तो जो updated array होगा that will be 1 2 3 6 5. But instead of that, ये मुझे नहीं चाहिए था. I want something like this: 1 2 3 6 4 and 5. So what I want to keep, I want to shift all these elements here by right one by one, and जो space create होगा वहां पे मुझे ये 6 स्टोर करना. So to do this, I need to do this shifting here, right? इन दो elements को I need to shift. So its shifting will take like order and time in worst case. तो अगर आपको किसी बीच में स्टोर करना है कुछ वैल्यू, तो और आपको लाइक ऑल्टर वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना, तो यू नीड टू डू ऑल दिस शिफ्टिंग देयर
to like shift the elements and make the space for the upcoming elements. So the insertion in the middle is time consuming also. So but apart from this, the main issue is still जो है अपने पास that is कि array की size का issue. Size is fixed. So what can we do? How can we create something जो for example जैसे अपने जो participants वाला जो example ले रहे थे कि event participants. So अगर if you don't know like before end की कितने participants आपके पास आने वाले हैं तो how can you store the information about these participants in a like more suitable data structure ताकि बार बार आपको like कि you don't have to worry about कि too small storage or too large storage. So right, so you don't have to worry about these two issues occurred in the array. So what can we do? So डायनेमिक that's मेमोरी एलोकेशन से कर सकते हैं. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक अप्रोच है. तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में भी क्या होता है कि like you create a consecutive space for the in the memory and then create an array in that, right? That's the like, dynamic memory. तो उस केस में भी आपको क्या करना होगा कि बाद में like because this is your memory, तो जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हो यूजिंग malloc, so what you do, you reserve a space in the memory for some part, right? कि जैसे आपने 100 रिजर्व किए 100 इंटीजर्स के लिए 100 इंटीजर्स के लिए आपने मेमोरी एलोकेट की एंड देन यू कीप यूजिंग दैट. अगर ये फुल हो गई तो व्हाट यू नीड टू यू डू, यू रीएलोकेट दैट, राइट? और like you reallocate that memory using the कौन सा फंक्शन होता है reallocate calloc फंक्शन जो होता है एंड देन तो वापस जो रीएलोकेशन होगा वो क्या होगा, एक नया मेमोरी स्पेस देखेगा इन दी मेमोरी एंड जहाँ पे वो जो रिक्वायरमेंट थी वो satisfy उसके एंड दैट रिजर्व स्पेस विल बी रिजर्व, राइट? सो we'll use the same kind of concept in the linked list. So linked list में क्या होता है, instead of like कि since I don't know about for example जो हम participants वाला वो कर रहे थे, तो since I don't know the number of participants is unknown, तो what I can do कि let's create a data structure जो सिर्फ एक participants की information अभी store कर रही है. तो we'll store one information about the one participant and जैसे ही नया participant आता है तो I'll store information somewhere else about that participants information and दोनों जो है for example participant 1 है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर कर ली एंड जैसे ही कोई नया पार्टिसिपेंट आया पार्टिसिपेंट 2 उसकी इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर कर ली एंड सिंस दिस पार्टिसिपेंट 2 बाद में आया तो व्हाट आई कैन डू कि इंस्टेड ऑफ लाइक कि मुझे कंसेक्यूटिव जैसे अरेज स्टोर करते हैं मेमोरी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में, इंस्टेड ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस आई विल स्टोर इट समवेयर एल्स इन द मेमोरी एंड आई विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ लिंकेज है कि I'll स्टोर द इंफॉर्मेशन की जो पार्टिसिपेंट 2 की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर इन द P1, तो ताकि मैं P1 से P2 पे जा सकूं और P1 से P2 के और जैसे कोई पार्टिसिपेंट 3 आता है व्हाट आई विल डू सिंपली आई विल डू द स्टोर द पार्टिसिपेंट 3 एंड लिंक दैट टू द पार्टिसिपेंट एंड सिमिलरली पार्टिसिपेंट 4 हमारे पास आता है तो आई लिंक दैट टू द पार्टिसिपेंट and will keep continue doing this जब तक मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं. So, इससे मेरा फायदा क्या हुआ
I don't have to like allocate the memory location or memory for fix like 100,000 participants, and इन केस ऑफ लाइक कि अगर कम स्पेस एलोकेट कर दिया या ज्यादा स्पेस एलोकेट कर दिया तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस मेमोरी स्पेस इशू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे मेरे पास पार्टिसिपेंट्स आते जा रहे हैं, आई एम स्टोरिंग देम इनटू द मेमोरी, एंड उनको पहले जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनसे लिंक कर दे रहा हूँ ताकि आई कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ द कोड, एंड इस इंफॉर्मेशन को आई कैन स्टोर समवेयर, एक आई कैन कीप ए वेरिएबल usually known as a head। तो I'll store दी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ पार्टिसिपेंट 1 की कहाँ इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर्ड है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद जो पार्टिसिपेंट 2 कहाँ स्टोर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट 1 के पास है, एंड पार्टिसिपेंट 3 कहाँ पे स्टोर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट 2 के पास। सिमिलरली पार्टिसिपेंट 4 कहाँ पे स्टोर्ड है मेमोरी में उसकी इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट 3 के पास। तो if I have the access to this participant 1, I can access all these elements by traversing one by one. So this is the concept of something called linked list. Right. So so these are different nodes in the linked list, and I'm creating the link between different nodes. So that's why this is known as a link. Okay. So these two nodes are like connected via this link in the linked list. So even if I have access to this start node, of the linked list, I can access the information about the other जो nodes बाद में आए हैं linked list में. So I can keep traversing the linked list and access it. So this is how or this is the basic concept of the linked list. So how do we represent this in the memory? How can we create? Because in the array simply array को स्टोर करने की फंक्शनैलिटीज सिंपली आपकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोवाइड होती है, राइट? You are given a syntax and you can simply create the array for this will create the array. But what about linked list? Many programming language doesn't support linked list by default, like they don't have inbuilt support for the creating the linked list, but they do provide some kind of mechanism जिससे आप linked list को simulate कर सकते हैं. So before we go into this implementation detail, let me talk about one more thing. So this participant node जो हमने बोला है, this P1, इसमें क्या क्या चीजें स्टोर होनी चाहिए? So this P1 node, let's talk about this in the detail. So this is my node, linked list node. तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो इसमें there should be two things that should be stored here. First thing जो इसमें स्टोर होनी चाहिए, let's represent this in, so online you'll find that some people or most of the people represent this as a this kind of structure or as a like rectangle structure ताकि थोड़ा सा easy हो जाए. So this is my linked list node. Suppose कि participant 1 है and there is this participant 2. तो participant 1 वाले नोड के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमें लाइक चाहिए टू डू ऑल दिस लिंकिंग पार्ट एंड. तो हर नोड के पास दो इंफॉर्मेशन रहेगी. फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो डेटा की
जो पार्टिसिपेंट 1 की अगर पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करें तो पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन जो रहने वाली है, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन जो होगी वो होगी एक पॉइंटर टू दिस नेक्स्ट नोड. So second information that will be there in this is pointer to next node in the linked list, ताकि मैं इस पार्टिसिपेंट P1 से पार्टिसिपेंट P2 के पास जा सकूं. एंड सिमिलरली P2 के पास भी क्या होगी, P2 के पास भी दो इंफॉर्मेशन होगी, डेटा ऑफ द P2 लाइक नेम and the pointer to the next list, next node. And similarly जो next node होगा similarly this will store पार्टिसिपेंट 3 का जो नोड होगा वो भी दो टाइप की इंफॉर्मेशन रखेगा, डेटा इंफॉर्मेशन रखेगा जो इसकी नेम वगैरह होगा, और सिमिलरली पॉइंटर इंफॉर्मेशन रखेगा टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट नोड, एंड दैट्स इट. तो हर नोड stores two informations. First is the data part of the node, जिसमें उस नोड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि क्या क्या वैल्यूज है उस नोड की, that and the second part of the information that will be stored in the node is pointer to the next node. तो कि मैं इस because as I explained earlier कि पहले हमारे पास नोड फर्स्ट नोड आया and we stored that reference to that node in the head variable. तो इस नोड का इंफॉर्मेशन और जो रेफरेंस है मैंने हेड में स्टोर कर लिया बस. नाउ आई डोंट हैव टू लाइक स्टोर द रेफरेंस टू दिस नोड P2 P3, राइट, बिकॉज इतने वेरिएबल्स में थोड़े ना क्रिएट करूंगा इस प्रोग्राम. तो व्हाट आई विल डू इन P1 I will store the information regarding P2 and similarly P2 में P3 की information होगी, and so ताकि head के through I can go to the P1 and P1 से I can go to P2, P2 से I can go to P3 and P3 से I can go to P4 and so on until we reach the end of the list. तो जब तक हम लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते we can traverse through one by one the linked list. Okay, so now that we know how linked lists are represented, let's create, how can we implement this in the programming language? So in this C language, you might have studied about something called struct, right? उसके बारे में पढ़ा है. Struct एक user defined data type है which you can create as a collection of. So struct is in simple collection of primitive data types. Right? And that's it. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आप जैसे हम पार्टिसिपेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो एक पार्टिसिपेंट है, उसके बारे में मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी. फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, उसका एज, उसकी आईडी, ऑल दीज विल बी स्टोर्ड है. तो कैसे स्टोर करेंगे? नेम के लिए आप एक डेटा टाइप यूज करते हो, वो लाइक सपोज स्ट्रिंग यू यूज, एज के लिए यू यूज इंटीजर डेटा टाइप, आईडी के लिए यू यूज इंटीजर डेटा टाइप. सो अब आपको अगर 100 पार्टिसिपेंट्स की ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो what you need to do, simply you need to create one array for the name, another array for the age, and another array for the id. And this managing these three arrays will be quite a troublesome task. So instead of keeping these primitive data types, what we do in this C, it is provided a simple data type called
more complex data type called struct, which can take these different data types and form a single one. एक combined data type आप एक form कर सकते हो, which is known as a struct. So struct participant. So you can store the name, something like this, and now this will. So यहाँ पे क्या हो रहा है? This struct is creating a complex data type which will combinedly store the all the information about these data types. So something like this, and this one struct can be considered as a our one node in the linked list. So now let's create our participants, or let's create a simple linked list. Forget about the participants. Let us first create a simple linked list. Like for example, I have this linked list which stores the integer informations. So you can think of like this is the linked list which store the IDs of the. For example, right now I only need to store the IDs for the participants. Don't have to worry about their names and सिंपली हर पार्टिसिपेंट्स को एक यूनिक आईडी में दे रहा हूँ, एंड उसकी वो आईडी को मुझे कहीं पे स्टोर करना, ताकि आई कैन whenever I call this ID of the participant, वो participant हमारे पास आ जाए. So instead of like storing name, age, and all this, I'll simply, for the simplicity, I'll simply store the IDs in a linked list. Okay, so how can we do this? So you can this each node I need to represent this node somehow in our computer memory. So in C, I can create a structured data type. Node which takes integer ID, or let's say value, and another one. As I explained, कि हर linked list node has two values. First, it has the data regarding the. तो इस हर नोड के पास दो वैल्यूज है, राइट? दो, अगर मुझे इस हर नोड की इंटरनल स्ट्रक्चर आई वांट टू नो, so this node has two kind of values. One is the data, and second is pointer to next node. So to represent this in a C or in a computer, I can use this. So this integer value will store our data part, and this is the pointer to the next node. So, and now I can create a chain of these nodes in my program, and that will be our fix. So before we go into this actual program implementation, so as I explained कि हर नोड के पास दो टाइप की इंफॉर्मेशन है, एंड दे आर कनेक्टेड इन अ पॉइंटर मैनर, कि हर नोड
next pointer का एक information रख रहा है. So this is called, this is something called, जो example हम पढ़ रहे थे, this is something called singly linked list. So there are three types of linked list जो काफी popular है. First is this singly linked list. तो this singly linked list क्या करती है, इसका हर node has the some value like 1 and the pointer to the next node. Okay. And जैसे list end हुई, it will point to the null or end of the linked list. So this is one example of the singly linked list where one pointer points to the next node. But what if I want to like customize this in a more complex manner, and ये जो node है ये अपने next के साथ साथ अपने previous node की भी information अपने पास रखे, right? So I can customize in this manner also, ना कि simply सिर्फ next node के साथ साथ I can give the information about the previous node also. So here I have this data and this next node. So but ये pointer this will storing the information about the back node also कि next node के पहले और previous node कौन सा है मेरा, something like this. And since this is the head, it will point to the null. तो अगर कोई नोड अपने फर्स्ट नोड के साथ साथ लाइक अपने नेक्स्ट नोड के साथ साथ अगर प्रीवियस नोड की भी इंफॉर्मेशन अपने पास रखे तो दैट इज नोन एज ए डबल लिंक्ड लिस्ट. And the third part is circular. तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या करते हैं कि जैसे इन दिस सिंगल लिंक लिस्ट, इन दिस सिंगल लिंक लिस्ट व्हाट वी आर डूइंग कि एक नोड हमारे पास वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट को, एंड जो लास्ट नोड है वो नल को पॉइंट कर रहा है टू डिनोट की एंड ऑफ द लिस्ट. बट व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू द नल ये लास्ट नोड फिर से एक सर्कुलर मैनर में स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर ताकि आई कैन ट्रैवर्स थ्रू द लिस्ट एंड कम बैक टू द स्टार्ट ऑफ द नोड. तो दिस in this manner this is known as a circular linked list. और तो अगर last node instead of pointing to the null, if it points back to the head node, then this will create a circle in the linked list. So this is known as a circular linked list. So we'll go over these in one by one. So first let's talk about the singly linked list. Okay, so singly linked list होगा. So we have this simple linked list where each node points to their next node in the list and last node points to the null. Okay, so this is our single linked list. Now how can I implement this in this C? So as I explained, this each node
each node has two informations. First, the data, and the second is pointer to the next node. So to represent this one node, I can use the struct part. Struct node I can create, which has two values. First, integer data. तो लेट्स सपोज कि अभी के लिए अपने पास जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, बट दिस कैन हैव एनी अदर डेटा टाइप्स लाइक float, double, all these things you can have, and you can also have like multiple types of data type. डेटा की नेम आपके पास अलग डेटा है, एज अलग डेटा है. जैसे अगर आपको स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट या जैसे पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो पार्टिसिपेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो एंड दिस सेकंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो वहां पे होगी वो होगी पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. तो I am storing this information as a pointer to the next. So this data you can have like multiple types of this data, or you can have like multiple values also. कि अगर आपको जैसे पार्टिसिपेंट वाला वो करना था तो you can have this struct participant, and you can have like integer id, integer age, और फॉर एग्जांपल सपोज कि पार्टिसिपेंट और किसी उसका था कि वेदर किस टाइप का इवेंट हो जिसमें डबल वैल्यू. Let's say you have something called some kind of event which also requires the weight of the participants. So you can store the weight also. And also one thing that we need is the pointer to the next node. So and at the end I need the pointer. To access the pointer, you can simply use the struct. You can use the struct and then sorry, struct participant star. I can point to the next node in the linked list. Okay, so this is how you can represent one node in the. So let's see this example in the real. So let's create a simple program which stores this information. So let me okay. So starting with it's a C program, so we'll first include the include stdio dot h. Okay, so this is our general template for the C program. So now let's create the node, linked list node. So let's start. Let's create the linked list which stores the what can you say participants itself or okay. I'm not doing this. So let's create a linked list which it stores the participants and then any event. So this participants has two type of information.
one ID, right? तो एक तो ID हम स्टोर कर रहे हैं लिस्ट की, so and you can have the data in, okay, so into the ID we have और किस टाइप का डेटा हम देते हैं, age and weight. So integer age you can have integer weight, so now at the end we need to keep the pointer to the next node, so integer participants कि हम एक से एक पार्टिसिपेंट की वो करें तो पार्टिसिपेंट एंड नेक्स्ट. So this is my one node of the linked list. So I have defined this one structure which will like create a one blueprint of the linked list node, and now I can simply create linked list vector. So I can create several of the linked list, so several of these nodes and attach them into single. Okay, so let us start with the okay, so let's start with the creating the our head node. So struct participant star and since initially there are no participants, I will simply create head. Okay. Now in this program, let's create one function to insert the node. So this insert node will take 2 or 3 parameters. First, it will take the head of the linked list. Head. So I'll pass pointer to this head node and उसके बाद ताकि because हर लिंक लिस्ट का को एक्सेस करने के लिए आई नीड हेड ऑफ दैट लिंक लिस्ट, और उस हेड अगर मेरे पास हेड है लिंक लिस्ट का तो आई कैन एक्सेस एनी लिंक लिस्ट or any other node in the linked list by just traversing over the linked list. So I simply need head of the linked list, and after that क्या वैल्यू मुझे स्टोर करनी है. So okay, now this program will become more complex if we continue with the participant one. So let's make it more simple. I think for now let's create this linked list which has simple one value, integer data, and for now let's keep it more simple towards the, so let's and okay now and जो value आपको insert करनी है that you can do. And so before we go into the like full-fledged function, let me simply give you an depth of what you can. So I have created this head node. So let me create some more nodes like structure node star one, which will have this. Right. So what it will have? It will have some values like key. Initially I'll set the star 2 star 3. So I have created 3 nodes. Initially I'm setting those null, and now let's do this, set some values to this. So what I want to create something like this kind of structure.
Okay, so I want to create this kind of structure where I have this first node, second node, and third node. Okay, so this first node will be the head, and this third node will be the end, which will have the null value. Okay, so I want to create this kind of structure in the list. So let's do this. So I have created these three node 1, 2, 3, and now let me set. So फर्स्ट नोड का डेटा वैल्यू क्या है 1. सो लेट मी सेट दिस टू दी. तो किसी भी डेटा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जैसे आपने स्ट्रिंग में पढ़ा होगा यू यूज समथिंग कॉल्ड एरो सिंबल. तो 1 एंड डेटा इक्वल टू 1. सिमिलरली 2 डॉट डेटा 3 डॉट डेटा. So this arrow symbol what it does, it using this you can access कि मुझे कौन सा, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 टाइप की वैल्यू राइट. एक तो नोड वैल्यू है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है, एंड एक है इंटीजर वैल्यू और इंटीजर डेटा जो मुझे उस करंट नोड की वैल्यू दिखा रहा है. सो आई वांट टू सेट दैट वैल्यू. तो यू कैन यूज द pointer to the data part and it will give you the access to the this. Okay, similarly 2 dot data you can get the 2. And so as you can see from this diagram, head क्या है, head 1 के इक्वल है. तो I simply set this to head equal to the 1, and 1 का जो नेक्स्ट है, 1 का नेक्स्ट पॉइंटर इट इज पॉइंटिंग टू दी 2. सो 1 डॉट 1 का जो नेक्स्ट है वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल, एंड 2 का जो नेक्स्ट है दैट इज पॉइंटिंग टू दी 3, एंड 3 का जो नेक्स्ट है दैट इज पॉइंटिंग टू दी which represents the end of the linked list. And now we can traverse over this linked list and print the values. So let me simply create one function, print list, which takes the so struct node star head, and I'll simply use this to like print the data of the list. So one thing you need to remember about the linked list कि अगर आपके जब तक आपके पास हेड है you can access the entire linked list. So every time when you work with the linked list, make sure कि आप directly head में changes ना करें. Simply create a new like a temporary node like current, and उसमें head की वैल्यू को आप स्टोर कर लो, head के पॉइंटर, ताकि आप हेड में डायरेक्टली चेंज नहीं करें और हेड हमेशा आपके पास सेफ रहे. बिकॉज इफ यू लूज द हेड आप you will lose the access to the linkage. So always whenever you are working with the linked list, make sure that you first store the head somewhere in the link or at a temporary variable and then work with that temporary variable. So what I want to do, I want to traverse over the list. So traverse करने के लिए क्या करूँ, current not equal to null. What I'm doing, I will simply print the values. So print up percentage d current dot data, and then update the current to the current dot text.
हाँ, at the end. सर वो डबल पॉइंटर का मीनिंग बता दीजिए ना। हाँ, ये डबल पॉइंटर का। ओके, सो ये क्या है कि जैसे आपने ये जो हेड बनाया, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो जो आपका नोड है, और तो जैसे आप कोई लिंक लिस्ट का नोड है, इसको right, so I think I missed one part, that let me just explain this, that and I'll come to this. ओके, तो हमने यहाँ पे नोड बना दिए, बट व्हाट वी डिड कि अभी तक हमने इन नोड्स को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की है कुछ भी, दैट आई मिस। तो होगा क्या कि जैसे आपको यहाँ पे जो नोड है, व्हाट यू नीड टू डू टू क्रिएट दिस नोड इन द मेमोरी। तो अभी तक से जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो एक तरह से ब्लूप्रिंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपने ये नोड, इस नोड वाला जो बना तो दिया, बट ये ओनली, दिस इज ओनली ब्लूप्रिंट, इट डजंट हैव एनी मेमोरी इन दिस सिस्टम फॉर नाउ, कोई डेटा नहीं। तो मुझे जो ऐसे ये नोड्स बनाने हैं, इनके लिए मुझे इसको मेमोरी एलोकेट करनी होगी। तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है सी में, यूजिंग malloc फंक्शन। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट, तो आई हैव दिस कंटिन्यूअस मेमोरी। तो मुझे हर नोड के लिए एक मेमोरी असाइन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल इन दिस, एट दिस पोजीशन आई स्टोर दिस। तो मेमोरी असाइन कैसे करते हैं, स्ट्रक्ट battery, but like this writing. So how do you like assign the memory, what you need to do? तो आपने ये शायद पढ़ा होगा, स्ट्रक्ट स्टार। तो मुझे एक तरह से करना क्या है, मुझे स्ट्रक्ट टाइप का एक नोड टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना है मेमोरी। इस मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आई नीड टू असाइन दिस मेमोरी, बिकॉज सी में क्या होता है, आप डायरेक्ट मेमोरी असाइन नहीं होती किसी। तो ऐसे यहाँ पे किस टाइप की मेमोरी चाहिए, मुझे कितना डेटा चाहिए, आई नीड टू असाइन दिस, राइट, इतनी मेमोरी मुझे रिजर्व करनी होगी। तो व्हाट यू नीड यूज, you use something called malloc function for that purpose, right? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा स्ट्रक्ट के बारे में। तो malloc फंक्शन क्या करता है, malloc फंक्शन क्रिएट्स अ मेमोरी। तो लेट तो दिस malloc फंक्शन व्हाट इट डज, इट allocates दिस मेमोरी जितनी आपको चाहिए। तो इन malloc फंक्शन यू पास समथिंग कॉल्ड साइज, कि कितनी मेमोरी आपको चाहिए। तो इस साइज ऑफ फंक्शन, देयर इज दिस साइज ऑफ फंक्शन इन दिस सी which takes a argument। नाउ तो होगा क्या कि ये जो साइज ऑफ फंक्शन है, तो इस साइज ऑफ फंक्शन में जो भी मैंने पास किया,
ये उसकी साइज कंप्यूट करेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक बाइट्स और बिट्स की कितनी मेमोरी मुझे चाहिए, एंड दिस malloc function will reserve that much memory in the our system memory, that much space in the system memory, and उसका पॉइंटर रिटर्न करता है ये malloc function। तो दिस पॉइंटर जो ये रिटर्न करता है वो void टाइप होता है, एंड सो I can typecast that pointer into star node, so that's how। तो हुआ क्या है, this what this line will do, this line will reserve the memory for the this node जो मैंने क्रिएट किया है। तो here I have created the memory space, for this node 1, and उसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया। तो जो ये यहाँ पे जो मेमोरी स्पेस क्रिएट हुआ है उसका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। That's ये यहाँ पे ये काम करता है। नाउ जो डबल पॉइंटर है, तो first let me fix the code first and then we'll move to the double pointer। So but instead of simply assigning this null, what I needed to do, I needed to allocate the memory for this malloc size of struct node and same j var। Now that I have assigned the memory for this, now I can set the values। Okay, अब मेरे पास वो स्पेस रिजर्व हो गया मेमोरी में, एंड आई कैन सेट। नाउ दैट यू आर आस्किंग कि ये डबल पॉइंटर क्या करता है, तो व्हाट दिस डबल पॉइंटर इज डूइंग, एज यू कैन सी यहाँ पे जो हेड पॉइंटर है, तो हेड पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, वन को रेफर कर रहा है, जो वन वेरिएबल है और ये जो वन पॉइंटर है, तो यहाँ पे हेड और वन एक तरह से सेम हो गया है एट दिस मोमेंट। तो व्हाट इज डूइंग कि जो मैंने यहाँ पे बनाया था, हेड इज पॉइंटिंग टू दिस वन, this memory location, this is my head। so this is the head जो इसको पॉइंट कर नाउ, एंड यहाँ पे कहीं पे तो कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई और डेटा आ सकता है, एंड इसके बाद कहीं मेमोरी में यहाँ पे होगा जो होगा वो, तो दिस इज वन, यहाँ पे कहीं पे टू होगा, एंड यहाँ पे कहीं पे हो सकता है थ्री। ऐसा भी हो सकता है कि थ्री यहाँ पे हो, टू यहाँ पे हो, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज कि आप, क्योंकि वी डोंट नो कि यहाँ पे कहाँ पे स्टोर होंगे ये मेमोरी में, तो ऐसा हो सकता है कि थ्री यहाँ पे हो एंड टू यहाँ पे हो, एंड नाउ दैट्स व्हाई वी नीड सम काइंड ऑफ लाइक रेफरेंस कि मैं इनको ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो जो वन के पास जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे, और जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, एंड इसका नेक्स्ट नल को, ताकि दिस डिनोट्स की मेरा एंड हो गया। So these are simple variables, जो pointer type के variables हैं, because somehow I am storing the pointer value, pointer to these memory locations। तो ये जो variables मैंने create किए हैं, these are pointer variables। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं डबल पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, तो उस तो डबल पॉइंटर क्या डिनोट कर रहा है कि मैं पॉइंटर वेरिएबल का भी पॉइंटर पास कर रहा हूँ इस फंक्शन में। तो दिस इज द पास बाय रेफरेंस, नॉट पास बाय वैल्यू। तो अगर सिंपली आप ये करो, एक पॉइंटर हटा दो, तो दिस विल आल्सो वर्क, दिस विल सिंपली, यू कैन सिंपली डू दिस, एंड ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ पासिंग द हेड का रेफरेंस, ये हेड की एक वैल्यू पास करेगा हेड, तो दिस विल बी पास बाय वैल्यू, नॉट द पास बाय रेफरेंस।
but I want, so if you do this also, ये भी वर्क कर जाएगा in this scenario. राइट नाउ जो हम काम करना चाहते हैं उसके केस में दिस विल वर्क, एंड if I simply call this function print list and pass the head into this, let's, तो कैसे करते हैं, gcc print list dot slash, and as you can see जो वैल्यूज थी वो प्रिंट हो गई. बट तो अभी के लिए जो मेरा, चलो मैं अभी के लिए सिंगल पॉइंटर्स को यूज कर रहा हूँ. बट नाउ जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हमने लिंक लिस्ट में वैल्यूज असाइन कर दी, हो गया, ठीक है. तो अभी के लिए तो मैं ऐसे मैन्युअली ऐड कर रहा हूँ नोट्स, राइट. बट व्हाट इफ आई डोंट वांट दीज, ऐसे में ऐड करो. व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट अ प्रॉपर फंक्शन जो लिंक लिस्ट में नोड ऐड कर सके. So let's create a addition function, a function which can insert the node in the linked list, right? Because जो आपने linked list बनाई है अभी के लिए, so तो linked list data structure जो हमने पढ़ा है, so this linked list has the data that I have this kind of in linked list, and it is नाउ आई वांट टू सी कि कौन कौन से ऑपरेशंस में इस लिंक लिस्ट पे परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट. जैसे अरे में हमने पढ़ा था कि अरे में यू कैन इंसर्ट एलिमेंट, यू कैन अपडेट एन एलिमेंट, एक्सेस कर सकते हो किसी एलिमेंट को, तो कैन एंड डिलीट. तो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस आई कैन परफॉर्म ऑन दिस लिंक लिस्ट. तो ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो मेन ऑपरेशंस व्हिच आर देयर इन द लिंक लिस्ट that we should know about is the addition of the node, right. कि एक I should be able to insert a node in the linked list. I should be able to delete a node, and at the end I should be able to print the linked list. ताकि मुझे अगर डेटा चाहिए तो प्रिंट कैसे कर सकते हैं. वी ऑलरेडी सो वी डिफाइंड अ फंक्शन टू प्रिंट दिस लिंक्ड लिस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंसर्शन. ओके, तो as you can see in this linked list itself, मेरे पास नोड ऐड करने के लिए बहुत सारी चॉइसेस है. आइदर आई कैन ऐड अ नोड हेयर, आई कैन ऐड नोड इन द बिगिन, एट द मिडल पार्ट और समवेयर इन द बिटवीन, और एक आप नोड एक एंड में ऐड कर सकते हो. तो you can either do like insertion at the beginning, you can do insertion at any at the end, अगर आपको उसके एंड में ऐड करना, और you can do insertion at any index. Okay, so let's talk about this. How to implement these each insertion function. So let me simply create a new linked list here. I have this linked list.
ओके, तो मुझे लेट्स टॉक अबाउट द इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे कोई नोड इंसर्ट करना है। तो आई नो दिस इज द हेड पॉइंटर। तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंसर्ट अ नोड एंड हेड को हमें अपडेट करना होगा, राइट? ताकि हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। So suppose I want to insert a node called 5. I have this node and मुझे इसको यहाँ पे insert करना है। तो what you need to do is 5 के पास भी एक next pointer है जो अभी के लिए null को point कर रहा है। एक तरह से न्यू नोड है तो इसका नेक्स्ट अभी के लिए null point कर रहा है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसका null को उठा के इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू द null, तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर को इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू null मुझे यहाँ पे पॉइंट करवाना है और ये हेड वापस यहाँ पे पॉइंट हो जाए। तो सिंपली जो नेक्स्ट न्यू नोड जो आया, यू कैन दिस विल पॉइंट टू द फर्स्ट लाइक हेड, एंड हेड को नेक्स्ट को मुझे अपडेट करके इसको पॉइंट करवाना। दैट्स इट, एंड this will be the insertion at the beginning. So let's see this in the code part. See how can we insert a node at the beginning of the list. So this insert function I'm taking, insert node star. Now I need to take this double pointer because now I need to update the linked list itself, right? हेड की कॉपी मुझे नहीं चाहिए, अब हेड इटसेल्फ चाहिए। और इंटीजर वैल्यू जो आपको इंसर्ट करनी है एंड इंटीजर इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे आपको। तो पहले मुझे since I only have this integer value, I need to create a temporary node जिसको मुझे इंस्टॉल करना है। तो you need to create the node first. नोड कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली node star malloc and size of struct, and this will create, and इस temp की वैल्यू को मैं क्या सेट कर रहा हूँ, temp dot data value and temp dot next। ठीक है, so this is what I need to do, create a node in the list। So that's it, so this is the node creation। So you can either create another function to do separate this process, but let's stick now। तो स्टार्ट में ऐड करना, इंसर्ट एट द स्टार्ट। तो स्टार्ट पे ऐड करने के लिए, तो लेट सपोज कि मैं इंडेक्स अगर आप 0 पास करते हो, दैट मींस कि आप इनिशियल पोजीशन पे स्टार्ट करना है। तो आई विल सिंपली, सो बिफोर वी गो इनटू दिस इंसर्शन पार्ट, आई टोल्ड यू जस्ट मोमेंट बिफोर कि जब भी आप लिंक्ड लिस्ट के साथ वर्क कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू नीड टू डू इज स्टोर द हेड समवेयर, कि हेड की वैल्यू को आपको कहीं पे स्टोर कर लो ताकि बाद में यू डोंट लूज द हेड वैल्यू। सो सिंपली स्टोर द हेड वैल्यू इनटू अ टेम्पररी variable called current, and that's it। Now all things that you do with this current value, and जैसे ही आपका हो जाए इसको हेड को फिर से इस पे असाइन कर दो। तो ठीक है, तो अगर
if we are like passing index equal to 0, that means कि हमें इनिशियल पोजीशन पे इसको स्टोर करना न्यू नोड को. तो व्हाट आई नीड टू सिंपली, जैसे एक्सप्लेन कि जो नया नोड आया है उसका नेक्स्ट नाउ शुड पॉइंट टू द फर्स्ट वन, और हेड को हम अपडेट करके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करवाएंगे, ताकि तो नेक्स्ट नया नोड क्या है, टेम्प. तो टेम्प डॉट नेक्स्ट शुड पॉइंट टू द हेड, और हेड की जगह हेड किसमें स्टोर है, यहाँ पे करंट में. नाउ करंट डॉट नेक्स्ट शुड पॉइंट टू द टेम्प itself, and that's it. And now you can simply store the current. And this will simply do our job. So let's test it out. So we will use the insert node function to pass. First, I need to pass the head, a pointer to the head, some value, let's say 1, and index 0. And let's call the print list function, ताकि we can know कि print list में कुछ हुआ है. Let's call it again. Insert head to and let's print. Okay. तो इनिशियली मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो इनिशियली लिस्ट इज एम्प्टी. उसके बाद एक नोड हम एंटर कर रहे हैं, दैट इज 1. तो आफ्टर दैट आउटपुट शुड बी 1, एंड आफ्टर दैट we are entering another node, so output should be 2 and then 1 followed by, right, and this 2 points because दोनों को start position पे enter कर. So let's run this program. Okay. Now that's the problem you don't have to see. Segmentation fault. Okay, why? Okay, I know. Current dot next को हमें किस पे पॉइंट करना था, सॉरी, ठीक है. Okay, index equal to 0, सही है. malloc function open. Okay, so let's add this. अगर नोड क्रिएट ही नहीं हुआ तो मैंने उसको रिटर्न किया. देयर इज समथिंग लाइक कि आपकी मेमोरी फुल हो गई है वगैरह, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एन इशू इन नोट केस. So this will return, but apart from that, okay, I know क्या. तो इशू क्या आ रहा है, वी आर यूजिंग दिस करंट डॉट नेक्स्ट, बट अभी तो कोई करंट है ही नहीं. अभी तो एट द बिगिनिंग जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इन द स्टार्ट हेड इज नल, राइट, और
in the start of the chart, or head is simply null. So अगर head null है तो what you need to do, simply जो भी आपका नया नोड आया है उसको head के इक्वल कर दो and that's it. And I think this should okay. Okay, it's inserting, so that's good. But it didn't show anything. Okay, so ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो हमने क्या किया, temp dot next equal to head. Okay, and uh, yes. Okay, so you said position based over there. This computer. Okay, ठीक है, तो सिंपली करना कुछ भी नहीं है, and we are adding at the start of the linked list itself, तो मुझे head को आफ्टर ऑल अपडेट करना ही पड़ेगा, तो I'm simply performing the operation on the head itself. तो सिंपली जो आया है, जो न्यू नोड हमारे पास आ रहा है, it is this. So I have, so this is my head, and now I have this another node coming in the link list, which should be inserted like 5. तो टेक्निकल क्या करना है, मुझे इस हेड को 5 पे पॉइंट करवाना है एंड 5 को यहाँ पे पॉइंट करवाना है, दैट्स इट, एंड दैट शुड, तो एट द एंड अपडेटेड लिंक लिस्ट क्या होगी, 5 1 2 3 and 4. So now this is my new head, and जो हम जो टास्क कर रहे थे, that's what we did in this code part. Okay. So now what about the, ठीक है, तो this is the insertion at the beginning, which is easy. Now let's talk about insertion at the end. So now जैसे I have this linked list, and the last point is, so this is my head. And okay, so one thing that I forgot to mention is कि sometimes this node जो last node होता है, that is also known as a tail node of the linked list. So now I want to insert in this linked list. So I have this new node called 5, and I want it to be inserted in the linked list at the end of the linked list. यहाँ पे मुझे insert करना है.
So what I need to do, I need to simply first traverse over the linked list, because आपके पास अभी सिर्फ हेड का रेफरेंस है, यू ओनली हैव हेड। तो आपका जो करंटली आप यहाँ पे हो, तो अब डायरेक्टली एंड पे इंसर्ट करने के लिए आपको पहले वहां तक जाना पड़ेगा। सो यू नीड टू ट्रेवर्स ओवर द लिंक लिस्ट, एंड देन जैसे आप यहाँ पे पहुंचे, तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय करंट नोड। तो जो आप हम कर रहे थे करंट इक्वल टू हेड, तो इनिशियली दिस विल बी द हेड, हेड विल करंट विल पॉइंट, एंड जैसे ही करंट यहाँ पे आया, सिंपली मुझे करना है क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल टू द न्यू नोड, जो टेम्प जो है, लेट्स सपोज दिस इज द टेम्प नोड, बस, एंड दैट्स इट। इंसर्शन एट द एंड इज also quite easy कि आप simply traverse over the linked list। तो insertion at this two steps है, traverse till the end node of linked list, and then set next pointer in new node, and that's it, and this will do the trick of our insertion at the end। और similarly अगर मुझे insertion at beginning के लिए स्टेप्स लिखने होते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली सेट नेक्स्ट pointer of new node to head, and then update head pointer, and this is it। So let's do this also, and okay, so while we are at it, let's discuss the key, how can we insert at the any position। So for third जो insertion पढ़ रहे थे, insertion at any index। So suppose I have this linked list again, and I am this new node, so this head is pointing here। Now I have this new node coming in 5, so let's name this temp, and I wanted to insert at this at index 2। तो इंडेक्स अगर मैं एक इंडेक्सिंग दूं यहाँ पे 0 1 2 3, तो आई वांटेड टू बी इंसर्टेड here। So after the insertion, linked list should look like this: 1 2 5 3 4 and 9, and this is it। तो मुझे ये टाइप का इंसर्शन करना है कि मुझे इंडेक्स 2 पे इंसर्ट करना है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आई यहाँ पे दिस इज माय करंट नोड, तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आपको इस नोड से एक पहले तक ट्रेवर्स करना होगा यहाँ तक। तो सिंपली यू नीड टू मूव करंट टिल हेयर,
और जैसे करंट यहाँ पे आ गया, सिंपली आपको क्या करना है, करंट, तो इफ आई राइट दिस इन स्टेप, ट्रेवर्स लिंक लिस्ट till one position behind the index, राइट। तो आपको एक तरह से इंडेक्स -1 तक आपको ट्रेवर्स करना है, देन जो सेट करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू दी टेम्प, जो हम आ रहे थे, तो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर है इसको हम टेम्प पे सेट करेंगे, टेम्प जो 5 है, एंड और उस टेम्प के नेक्स्ट को हम जो करंट का पहले से नोड था उस पे सेट, एंड थर्ड स्टेप इज सेट नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ टेम्प and that next pointer of the temp to the जो करंट का पहले वाला था। Okay, I think this step. So this should be the step 2, and third step should be that. सर वो ओवरलैप कर जाएगा तो ओवरलैप कैसे करेगा? सर वो करंट का नेक्स्ट पहले भी था बात। हाँ, तो ऐसा होगा ना, जैसे होगा क्या कि लेट मी, तो जैसे यहाँ पे ये लिंक लिस्ट थी इनिशियली, 1 2 एंड दिस इज माय नंबर, तो मुझे जो 5 ऐड करना था, दिस इज माय टेम्प, तो टेम्प का नेक्स्ट अभी नल पे सेट है, राइट। तो होगा क्या कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है इसको एट दिस पोजीशन, दिस इज माय 0 इंडेक्स 2 इंडेक्स, ठीक है, तो मुझे सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट करना, तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, करंट तक यहाँ तक जाऊंगा, तो मैंने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स किया और करंट को मैं लिंक लिस्ट के जहाँ पे इंडेक्स -1 तक ले गया। नाउ अभी करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, राइट। राइट ना, अभी करंट का नेक्स्ट जो है, करंट डॉट नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, तो अगर मैं इसको, राइट, तो इसको मुझे क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट है ना, टेम्प का नेक्स्ट, वो यहाँ पे पॉइंट करे, तो मुझे सम काइंड ऑफ दिस टाइप की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, राइट। सो अगर मैं ये करूं, जो स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 क्या कर रही है, टेम्प डॉट नेक्स्ट को करंट डॉट नेक्स्ट पे सेट कर रही है, तो ये करने से क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, नल, तो वो सेट हो जाएगा 3 पे, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड 5 भी एट द सेम पोजीशन इसको पॉइंट करा हुआ, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा एट दिस मोमेंट, राइट, एंड करंट यहाँ पे है, तो
ओवरलैप कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वी नो कि ये मेमोरी में कंजिक्यूटिवली स्टोर्ड नहीं है, ये अलग अलग जगह पे मेमोरी में स्टोर्ड है सारे नोट्स। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना कि जैसे यहाँ एट की हो सकता है कि ये नोट्स अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड हो मेमोरी में, जहाँ पे उनको स्पेस मिली, जहाँ पे मेलोक ने उसको स्टोर किया, वी डोंट नो अबाउट, देयर इज नो कंजिक्यूटिव एलोकेशन, तो देयर इज नो ओवरलैपिंग काइंड ऑफ थिंग, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। बट अभी के लिए जैसे ही मैंने ये सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट किया कि टेम्प डॉट नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट पे सेट कर दिया, तो अभी ये टेम्प है वो भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा 3 की। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यहां से ये कनेक्शन ब्रेक करके इसको यहाँ पे अटैच करना है, राइट। बस यही स्टेप करनी है, तो मुझे करंट डॉट नेक्स्ट को किस पे सेट करना है, टेम्प पे सेट करना है, एंड दैट्स इट, एंड मेरा काम हो जाएगा। तो अब हो गया क्लियर। Yes, sir. तो लेट्स सी दिस इन example कि how can we implement this. So we all have already implemented this inserted insertion at the beginning, तो इसके लिए तो सिंपली हमने ज्यादा कुछ करना नहीं था। now let's implement the insertion at the end, that's it. तो at the end, तो क्या करना है मुझे, तो लेट्स से कि एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इंडेक्स की वैल्यू -1 कर रहा हूँ, तो अगर कोई इंडेक्स को -1 पास करता है दैट मीन्स कि they want to insert something at the end of the list. तो एंड पे एंड करने के लिए क्या स्टेप्स थी मेरे पास, फर्स्ट ट्रेवर्स टिल द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो एंड तक ट्रेवर्स करने के लिए क्या करना होगा, आई हैव दिस करंट पॉइंटर जो इनिशियली हेड पे पॉइंट कर रहा है, तो हेड, ताकि अब मुझे, तो मैं एंड इस क्या कर सकता हूँ, एक वाइल लूप यूज कर सकता हूँ, एंड इट कीप कंटिन्यू, एंड मैं करंट को क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ करंट डॉट नेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, हर स्टेप पे इनिशियली करंट कहाँ था, करंट यहाँ पे था स्टार्ट पे एंड पे, तो जैसे मैंने करंट को करंट डॉट नेक्स्ट के सेट कर दिया, करंट अभी यहाँ पे आ जाएगा, एंड फिर से अगर करंट को करंट डॉट नेक्स्ट के इक्वल सेट किया तो करंट अब यहाँ पे आ जाएगा, एंड जब तक कि करंट एंड पर ना पहुंच जाए, तो ना मुझे यहाँ पे इसको जाके रोकना है। हम एंड को कैसे पहचान सकते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि करंट हैज रीच्ड द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। करंट जब नल हो जाएगा तो वो एंड पे पहुंच जाएगा। करंट जब नल हो जाएगा तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड के भी आगे चला जाएगा, राइट। मुझे लास्ट नोड पे रोकना है उसको, तो मुझे क्या करना, करंट डॉट नेक्स्ट जब नल हो जाए, जब तक नल, right? जावा में जो डॉट ऑपरेटर होता है वही सी में एरो ऑपरेटर होता है। ओके, स्क्रीन विजिबल है, सॉरी, और आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नाउ इज इट विजिबल।
Yes, basically. हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जब करंट इस करंट के नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, जैसे करंट डॉट नेक्स्ट नल हुआ, दैट मींस कि करंट इज एयर, तो इसकी नेक्स्ट क्या है, नल है। तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि करंट अब यहाँ पे पहुंच गया। जैसे पहुंचा तो जैसे ही वहां पे पहुंचा, दिस विल लूप विल एंड, अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली करंट के उसको क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू दैट्स इट। तो सेकंड स्टेप is the current dot set the next pointer of the end node, which is the current air, to the upcoming node temp, and since temp का next हम already null है, तो हमें वापस करने की जरूरत नहीं, and this will do the trick. So now let's talk about the insertion at any position. So else, तो अगर else इंडेक्स की कुछ और वैल्यू पास होती है, तो that means कि they want to insert at the any position in the list. So तो क्या करना है, That's it. अब इसके लिए तो इसके क्या स्टेप्स थे, पहले मुझे आई नीड टू ट्रेवर्स टिल द वन पोजीशन बिहाइंड द इंडेक्स। तो अगर जैसे इंडेक्स 2 पे मुझे स्टोर करना है, तो आई नीड टू गो, वो कैसे कर सकते हैं, आई कैन सिंपली यूज वन फॉर लूप इंटीजर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इंडेक्स एंड आई प्रेस एंड करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, दिस विल right, so this will keep traversing the list till we reach the list. मतलब जब तक कि हम उस इंडेक्स के उस तक ना पहुंच जाए, तब तक this list will keep traversing, right? Because let's take an example. For example, अगर मैं जैसे इंडेक्स यहाँ पे है, इस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो sorry, इस लिस्ट, तो इंडेक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है, 2 पे मुझे इंसर्ट करना है, तो करंट वैल्यू मेरा यहाँ पे, तो आई जो फॉर लूप है वो कितनी बार रन होगा, आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इंडेक्स, तो दैट मींस कि एक बार ही रन होगा फॉर लूप, एंड जैसे एक बार रन हुआ, करंट वैल्यू मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा, दैट्स इट, यही मुझे चाहिए था। तो मुझे बस फॉर लूप को इंडेक्स माइनस 1 टाइम्स रन करना है, एंड दैट विल गिव मी रिक्वायर्ड पोजीशन जहाँ पे मुझे पहुंचना। तो जैसे वहां पे पहुंचा, व्हाट आई नीड टू डू, first I need to set the temp dot next equal to the current dot next. So after that, simply temp dot next equal to the current. I is equal to 0 से क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पे मुझे कितनी बार उसको ट्रेवर्स करना है यही है। अगर मैं i इक्वल टू 0 से यहाँ पे कर दूं, तो मेरा ये लूप कितनी बार चलेगा, अब इंडेक्स की वैल्यू 2 है इस पोजीशन पे, अगर इंडेक्स की वैल्यू 2 है तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार है? चलेगा। तो मुझे 2 बार चलाना है क्या, अभी मुझे सिर्फ एक बार चलाना है, राइट? मेरा इसे इस पोजीशन पे करंट कहाँ पे है, करंट इनिशियली यहाँ पे है, और मुझे करंट को यहाँ पे लेके आना है, तो सिर्फ एक बार ही तो चाहिए मुझे, एक बार करंट डॉट नेक्स्ट करते आ जाएगा वो। तो मुझे एक्चुअली लूप को इंडेक्स माइनस 1 टाइम्स चलाना है, ताकि मैं उससे पुरानी पोजीशन पे पहुंचूं। मुझे इंडेक्स माइनस 1 तक जाना है ना, मुझे इंडेक्स तक नहीं जाना, इसलिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू, तो यहाँ पे
सिंपली आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि एक वाइल लूप लगा के कि सिर्फ इंडेक्स माइनस वन टाइम्स ये लूप चलना चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू, एक काउंटर को इंडेक्स माइनस वन तक सेट कर दो, और जब तक कि वो उससे जा लाइक, तो उतने बार चला सकते हो। बट फॉर लूप में भी सेम टास्क, एंड सिंपली temp डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, एंड current dot next equal to temp, and I think that should do the job for us. Okay, let's test it out. तो हम insertion at the beginning already हम टेस्ट कर चुके हैं, तो let's try this. Okay, now let's insert node and let's insert 3 at the end of the list. तो end of the list के लिए -1, and अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, and let's insert something else. Insert at, let's say 4. Let's keep inserting at the end also. Okay. Now let's test it out for the इस random position पे insert करके देखते हैं. Here let's insert by any random position. Let's set 2, and again so let's print list at here कि इसके बाद क्या लिस्ट आने चाहिए, and let's insert out again at the same position 2, and use 6 and insert at the position, and print list here. Okay, so before we run the program, let's check कि इसका आउटपुट आना क्या चाहिए. हम अगर खुद से मैन्युअली ये कोड यहाँ पे रन करें, तो लेट्स चेक कि आउटपुट क्या आएगा इसका. ओके, तो क्या आएगा आउटपुट? सर 1 2 3 4 आएगा. क्यों 5 6 क्यों नहीं आएगा? बाद में सर 5 6. हाँ, तो 6 तो इनिशियली ओवरराइट कर देगा 5 को. नहीं, ओवरराइट क्यों करेगा? चलो देखते हैं अभी. तो कि पोजीशन शिफ्ट हो सकती है ना, ओवरराइट थोड़ा ना करना है. अरे में ओवरराइट होता है, लिस्ट में तो आप शिफ्ट कर सकते हो आगे वाली का, उसका इंडेक्स चेंज हो जाएगा. तो ओके, लेट्स सी वन बाय वन. इनिशियली क्या होगा, एक नोड बनेगा हमारे पास एक वैल्यू के साथ, एंड दैट्स इट, राइट. ये होगा इनिशियली. नाउ आफ्टर सेकेंड लाइन के बाद क्या होगा, इसमें एक में टू ऐड होगा. सर 2 पहले आ जाएगा 1 से. राइट, 2 पहले आ जाएगा 1 से, ये होगा. आफ्टर दिस 3 इंसर्ट कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. तो एंड पे लिस्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 1 एंड 3 हो जाएगा. 2 1 3, राइट. एंड इसके बाद क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 4 इंसर्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ दिस, 2 1 3 एंड आफ्टर दैट 4. तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा दिस लाइन, तो दिस शुड प्रिंट समथिंग लाइक 2 1 3 4. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद आवर मैनुअल एग्जीक्यूशन. इसके बाद क्या होगा,
नाउ आई एम इंसर्टिंग 5 एट इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 क्या है अभी के लिए? यहाँ पे ये था मेरे पास लिंक, तो 0 1 2 3। इंडेक्स लिंक 2, सर लिंक लिस्ट में तो इंडेक्स नहीं होता है ना। हाँ इंडेक्स नहीं होता। बस मैं सर एक वो तरह से इमेजिन वो- करवा रहा हूँ एक इंडेक्स, ताकि इंसर्शन पोजीशन मुझे पता चल सके। तरह से कितने नोड के बाद इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंडेक्स सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नोड्स के बाद मुझे वो कौन सी पोजीशन पे मुझे इंडेक्स को इंसर्ट करना है। यस सर। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन दो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस कि दो नोड्स के बाद रिप्रेजेंट इंसर्ट करना है। तो क्या होगा? 2 2 1 5 3 4 हो जाएगा। 5 3 4, राइट। इसलिए यहाँ पे वो ओवरराइट नहीं करता, क्योंकि 2 पे ऑलरेडी वैल्यू है, तो क्या करेगा, सिर्फ शिफ्ट कर देगा उस वैल्यू को। एंड नाउ जो अपडेटेड इंडेक्स होगा वो ये हो जाएगा। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे जो आउटपुट आएगा, दैट आउटपुट शुड बी 2 1 5 3 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो इस पे क्या हो रहा है, 6 में इंसर्ट कर रहा हूँ। तो 2, उसके बाद 1, उसके बाद क्या आएगा, 6 6 फिर 5 3 4। 3 एंड 4। तो दैट आउटपुट, तो यहाँ पे अपडेटेड इंडेक्स होगा 0 1 3 4। एंड जो आउटपुट यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे, वो होगा 2 1 6 5 3 4। ओके, लेट्स सी, लेट्स रन आवर प्रोग्राम एंड चेक कि ये कितना ट्रू है, whether we have successfully implemented this code or not. So let me run this. Okay, तो compiler error नहीं है। Let's ओके, तो क्या सेम है या आउटपुट जो हम सेम है। देख रहे हैं? सेम ही है ना, 2 1 6 5, and as you can see, yes। तो पहला जो आउटपुट है 2 1 3 4, फिर 2 1 5 3 4, एंड आफ्टर दैट 2 1 6 5 3 4, एंड दैट्स इट। तो ये हो गया इंसर्शन लिस्टिंग। हाउ अबाउट डिलीशन? अगर मुझे कोई नोड डिलीट करना है तो क्या करना होगा? तो डिलीट करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सिंपली lost that pointer or remove that pointer। तो अगर किसी नोड के पॉइंटर को आप हटा देते हो, तो दैट मीन्स कि यू हैव डिलीटेड दैट नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। सो फॉर एग्जांपल, जो भी लिंक लिस्ट हमारी जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज 2 1 6 5 3 and 4। What if now I want to remove this? I want to remove 5 from it. So what you can do? Simply इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है यहाँ पे, इसको 5 को पॉइंट कराने की जगह क्या करा सकते हो, यहाँ पे पॉइंट करा दो डायरेक्टली। एंड नाउ आई हैव नो वे ऑफ एक्सेसिंग दिस 5। So that means कि I have deleted this node from the list and that's it। तो आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता, सिंपली पॉइंटर को आगे वाले नोड पे शिफ्ट कर दो। तो फॉर एग्जांपल इसमें भी वही है कि डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर स्टार्टिंग से डिलीट करना है तो क्या करोगे, ये मेरा हेड पॉइंटर है, तो
हेड पॉइंटर को क्या कर सकते हो आप, हेड को हेड के नेक्स्ट पे सेट कर दो एंड आई आई विल सक्सेसफुली डिलीट दिस। तो सेट हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट एंड दिस विल सक्सेसफुली डिलीट माय फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो सिमिलरली डिलीट एट द एंड, अगर एंड से डिलीट करना है तो क्या करना है, ट्रैवर्स टिल द एंड। तो मुझे मान लो ये नोड डिलीट करना है, फोर्थ वाला, तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट का जो ये नोड है वो नल को पॉइंट करता है, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। आई नीड टू डू दिस करंट पॉइंटर हेयर, करंट पॉइंटर के नेक्स्ट को आप डायरेक्ट नल पे सेट कर दो इंस्टेड ऑफ सेटिंग इट हेयर एंड दिस विल डिलीट दिस नोड। तो नोड जो एंड नोड है उससे एक पहले तक आओ और उसके बाद सेट करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल एंड दैट्स, तो आई विल सक्सेसफुली डिलीट दिस। एंड सिमिलरली अगर किसी रैंडम इंडेक्स पे डिलीट करना है, to the next page, तो अगर किसी रैंडम इंडेक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ट्रैवर्स टिल दिस, राइट, जैसे हम इंसर्शन के टाइम पे क्या कर रहे थे, उसके एक पहले तक इंसर्ट कर रहे थे, राइट, ट्रैवर्स टिल दिस एंड वन बिफोर दिस इंडेक्स एंड उसके बाद इंसर्ट कर रहे थे, तो सिमिलरली ट्रैवर्स टिल वन नोड behind the index and then set current dot next equal to next, right, because for example अगर मुझे जैसे इसी लिंक लिस्ट में I have this linked list एंड मुझे ये इंडेक्स डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, करंट को यहाँ पे लेके आऊंगा एंड इसके नेक्स्ट को करंट डॉट नेक्स्ट अभी यहाँ पे पॉइंट करा तो उसकी जगह आई सिंपली पॉइंट टू करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो एंड क्योंकि नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है ये, इस पे पॉइंट करा दो एंड दिस विल बी डन। तो लेट्स इंप्लीमेंट दिस, आई थिंक वी आर, it's 4 o'clock, so yeah, so let's implement this and we'll continue the rest of the thing in the next class. So let's update the void delete node and तो delete node में कुछ नहीं करना, node head, एक तो head लेगा and index, तरह से अभी हम इंडेक्स के बेसिस पे डिलीट कर रहे हैं। यू कैन इम्प्लीमेंट दिस सिमिलर फंक्शन लाइक कि आपको अगर एक कोई वैल्यू दी है और उस वैल्यू का नोड आपको डिलीट करना, तो यू कैन डू दैट आल्सो। सो what you need to do, simply index है तो let's delete from the beginning, तो स्टार्ट से डिलीट करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल इंडेक्स इक्वल टू 0, तो व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली
add equal to add dot next, and that's it. This will delete the first. Else if index बराबर -1 है, अगर मुझे सपोज डिलीट फ्रॉम द एंड, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, यू सिंपली ट्रैवर्स टिल द एंड, ट्रैवर्स एंड तक ट्रैवर्स करना है। तो एज आई एक्सप्लेन की जब भी आपको अगर ट्रैवर्सिंग वाले टास्क हो तो सिंपली क्रिएट अ टेम्पररी नोड करंट which stores the head variable, ताकि हेड को आप लूज ना करो कभी भी। एंड नाउ while current not next, not next, not equal to not, and after that that's it, and this will delete from this and delete from any index. Else what you can do, simply जो हम कर रहे थे पहले, नोड करंट हेड, वो जो फॉर लूप हमने लगाया था इंसर्शन के टाइम पे, इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इंडेक्स आई प्लस प्लस, एंड जैसे में आया उसके बाद क्या करना मुझे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, and that's it. This will do the task. Okay, so now let's test it out. तो अभी के लिए हमने यहाँ तक पहुंच गए थे, तो let's delete node, let's delete from the starting itself and print list. Let's delete another node from the end, delete node, and print list, delete node from any random index. Okay, so let's check it out. तो पहले let's do one thing, जैसे हम पहले कर रहे थे, copy this. ओके, तो पहले टेस्ट कर लेते हैं बाय हैंड की क्या आउटपुट्स आने चाहिए, एंड देन विल कंपेयर। तो इसके बाद में लिस्ट क्या थी हमारी, इफ दिस पोजीशन लिस्ट वाज 216534, तो at this position we had list 216534,
5 3 4 राइट, यही थी, हमने ये तो ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं. ओके, नाउ लेट्स चेक द डिलीट पार्ट. So right now I have this list 2 1 6 5 3 and 4. ओके, तो क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा? सर 1 6 5 3 4. राइट, तो इसके बाद लिस्ट शुड बी 1 6 5 3 4 एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. इसके बाद क्या आएगा? हम लास्ट से एंड कर रहे हैं. 6 5 3. 1 6 5 and 3. Okay, and what about this? सर 1 6 3. 2 वाला इंडेक्स, तो ये डिलीट कर रहे हैं. राइट, तो 1 6 3. तो एट दिस जो आउटपुट आना चाहिए वो 1 6 5 3 4. एट दिस 1 6 5 3 1 6 3. ओके, लेट्स चेक दिस आउट कि आउटपुट जो है वो सही आ रहा है क्या, इम्प्लीमेंटेशन किया है. Is that correct? So let's run this code. ओके, तो हेड को हम डायरेक्ट अपडेट नहीं कर पाएंगे इससे, तो व्हाट आई नीड टू डू, सिंपली क्या करना होगा, इससे रन के करना होगा. एंड बराबर करेक्ट, दैट शुड वर्क. ओके, ओके, आई थिंक सही आ रहा है आउटपुट. तो पहले हमने एंड किया, तो पहले डिलीट कर रहे हैं हम 0 पोजीशन पे, तो हमारा हेड डिलीट हो गया. तो 1 6 5 4 5 3 4 आ गया. उसके बाद हम लास्ट से डिलीट कर रहे हैं, तो 4 डिलीट हो जाएगा, तो 1 6 5 3 एंड उसके बाद 1 6. ओके, आई थिंक सही आ रहा है आउटपुट. यस सर. राइट, सही आ रहा है. ओके, कूल. तो आई थिंक this is how you can implement the linked list. So this is the single linked list. Similarly, you can implement the double linked list also. तो double linked list में तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो अभी हम सिर्फ एक पॉइंटर यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंटर, तो हमें बार बार और उस पर ट्रेवर्स करना पड़ रहा है इंसर्शन के टाइम पे, और जैसे एंड वाले पोजीशन में हमें बार बार जाना पड़ रहा है. तो समटाइम्स व्हाट पीपल डू, जैसे अभी हेड मेंटेन कर रहे हैं ना हम, तो एक और पॉइंटर वो मेंटेन कर लेते हैं कॉल्ड टेल पॉइंटर ऑल्सो. तो अगर लास्ट पे आपको कुछ करना है तो लास्ट इंसर्शंस वगैरह पे, तो दैट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस. Okay, so we'll continue this in the next class. So, okay, so I think that's it for the today, and we'll do the next. Okay, any doubts before? सर मेरे को एआई और बिग डेटा मिला है इलेक्ट्रिक, आज मेल आया था डीन का. एक मिनट, let me stop the recording.